Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 3, State and Government. Today I am going to deliver its 4th lecture, and in today's lecture, students will be able to discuss the rights only of Pakistani citizen according to the Constitution of 1973. So my dear students, let's start it with an activity. So my dear students, quickly take a blank sheet and a pen and write down 5 rights of human beings, at least 5 rights of a citizen. I hope everybody has done it. So आपने 5 अपने हकूक लिखे या human rights लिखे. So very good. Now let's move forward. So Allah says in Quran, and in their wealth there is acknowledged right for the needy and destitute. So my dear students, Allah ताला ने आपके माल में जो है वो ज़रूरतमंद लोगों का हिस्सा रखा है. So my dear students, let's quickly refresh the knowledge. So what is the difference between rights and responsibilities? हकूक में और जिम्मेदारियों में क्या फर्क है? जल्दी से वीडियो पॉज करके बताएं. Very good. Now quickly tell me that what are your basic rights? Education, healthcare facility, security, clean water, electricity, and there are many more. So tell some of your human rights. Right to live, freedom of speech, clean water, food, clothing, shelter, these all are basic human rights. Do you enjoy your rights? Of course. हमें अगर हकूक हासिल हो पूरी तरीके से तो हम डेफिनेटली उनको एंजॉय भी करते हैं. So now I request you all to please open page number 33 and 34 in your social 5 books. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Rights of Pakistani citizen in Constitution of 1973. The Constitution of Pakistan gives us a framework to govern a country. At the same time, it also has some laws to protect the rights of its citizens. These rights are discussed as follows. Number 1 is safeguard as to arrest and detention. यानी कि पकड़े जाने के और अरेस्ट के लिए जो है वो सेफ करते हैं, आपको सिक्योर करते हैं. If a person gets arrested, then he must be informed of the reason for his arrest. He has the right to consult and to be defended by the lawyer of his choice. अगर किसी शख्स को किसी जुर्म में पकड़ा जाता है तो उसको उसके जुर्म की वजह बताई जाए या उसको उसके अरेस्ट की वजह बताई जाए. इसके अलावा उसके पास अपने आप को डिफेंड करने का हक भी हासिल है और वो अपने मर्जी के वकील को हायर कर सकता है. सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन. नो पर्सन हैज द राइट टू हार्म एनीवन और हिज प्रॉपर्टी. किसी भी शख्स के पास किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का हक नहीं है. Slavery and forced labor is prohibited. No person can force a child under the age of 14 to work as labor. He shall not compel anyone into slavery or beggary. किसी भी शख्स के पास ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी को पकड़े और उसे जबरदस्ती या जबरी काम करवाए, और 14 साल से कम बच्चे भी लेबर वर्क नहीं कर सकते. Protection against repressive punishment. No one is allowed to punish a person for any such offense that is not a crime under the law. He could not be granted a greater punishment for a minor offense or punish a person for his previous wrong acts. So my dear students, retrospective punishment ऐसी punishment होती है जो कि या तो गुनाह से बड़ी हो, यानी कि किसी ने छोटा क्राइम किया और उसको उसकी बड़ी punishment दी जाए, ये अलाउ नहीं है. इसके अलावा किसी भी शख्स को उसके ना करदा गुनाह की सजा भी नहीं दी जा सकती. और रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट का मतलब ये भी है कि किसी ऐसे गुनाह की सजा देना जो कि किसी ने पास्ट में किया था और उस वक्त उसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना हुआ था और अब उसको फ्यूचर में आके पुराने किए हुए गुनाह की सजा आप नहीं दे सकते. सो दिस इज अ राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग कि उसको इस तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं दी जा सकती. नेक्स्ट इज डिग्निटी ऑफ अ पर्सन. अ पर्सन कैन नॉट डिस्टर्ब द प्रिवेसी ऑफ एनीवन्स होम. ही कैन नॉट टॉर्चर एनीवन फॉर हिज ओन पर्पस. किसी की भी प्रिवेसी को आप उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते. इसके अलावा आप किसी को अपनी मर्जी के लिए या अपनी सहूलत के लिए टॉर्चर भी नहीं कर सकते. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. A person can freely move throughout the country. He is allowed to make his home in any part of the country. हर इंसान के पास फ्रीली घूमने फिरने का मुल्क में हक है और वो पाकिस्तान की किसी भी जगह पर अपना घर बना सकता है. Religious liberty. A person of any religion is free to practice his beliefs. He can also make any institution for his religious purpose. हर इंसान के पास अपने religious को practice करने का हक हासिल है. फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन. हर इंसान के पास हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी की तिजारत, बिजनेस और
प्रोफेशन इख्तियार कर सकता है. एवरी सिटीजन हैज द राइट टू अडॉप्ट एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन. ही कैन ऑल्सो स्टार्ट एनी लॉफुल ट्रेड और बिजनेस. Property rights. Every citizen shall have the rights to acquire, hold and sell property in any part of the Pakistan. हर शख्स के पास यह हक हासिल है कि वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त कर सकता है. So my dear students, in today's lecture we have discussed that the Constitution of Pakistan provides social and religious liberty and safeguard to your life and property. So my dear students, for practice, for homework, what you will do is you will do question number 4 and 5. What are the rights of person who is being arrested? Define the term religious liberty. So you will do this in your notebooks, and in the next class we will discuss the responsibilities of a Pakistani citizen according to the 1973 Constitution. Until then, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.